Hello students, this video is for grade LKG. Let us start. This sheet is divided into three equal parts. So, in this we will learn about three different subjects which are English, Maths and EVS. Let us start with our first subject which is English. The question is, write and practice below alphabets in small letters for 4 times. Okay, what you have to do is you have to practice these letters, small letter. In alphabets के small letters को आपको practice करना है कितनी बार? 4 times. So यहाँ जो एक line दी हुई है ना, A है, what is written? A written है, A लिखा हुआ है, उसके बगल में एक line दी हुई है, उसमें आपको क्या करना है? 4 times with small distance, थोड़ा थोड़ा गैप दे के आपको क्या लिखना है? स्मॉल लेटर ए राइट करना है. What you will write? स्मॉल लेटर ए 4 times आपको राइट करना है, थोड़ा थोड़ा गैप देकर. ओके, what you will write? You will write small letter A for 4 times. How many times? 4 times. Yes. स्मॉल लेटर फॉर दीज गिवन अल्फ़ाबेट्स. ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर दिए हैं इनके स्मॉल लेटर्स को लिखना है 4 टाइम्स, थोड़ा थोड़ा गैप करके. अंडरस्टूड? सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एड 2 letters to make a meaningful word. In this what you have to do is you have to make 2-letter words. 3-letter words. 3-letter words आपको बनाना है. क्या करना है? एक लेटर ऑलरेडी गिवन है, 2 letter आपको खुद से ऐड करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. लाइक द फर्स्ट वन इज एफ दिया है और बाकी हमें 2 वर्ड यहाँ पे 2 letters यहाँ पे ऐड करने हैं. FAN, फैन. फैन बन गया. फैन मीन्स पंखा. FAN, fan. Next M letter दिया हुआ है. So what can we make? MAT, mat. MAT, mat. Next is P. Letter P given है. We have to add 2 letters and make a meaningful word. What can we make? PET, pet. PET, pet. Next is S. लेटर S दिया है, इसमें दो लेटर्स को और मिक्स करना है और क्या करना है? एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. सो क्या बना सकते हैं हम? SUN, sun. Understood? So in this way you have to add 2 letters. हर वर्ड में आपको 2 लेटर ऐड करना है और एक अच्छा सा मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करना है. अंडरस्टूड? सो let us revise alphabet A to Z with one word. एक word के साथ A to Z रिवाइज करते हैं. Speak with me. A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. J for joker. K for kite. L for lion. M for monkey. N for nest. O for owl.
P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yacht. Z for zebra. So, we have read A to Z with one word. Let us move to our next section, which is of maths. Write down the number names. In this, what we have to do is, we have to write down the number names. Number names write करना है. Okay, so let's revise number names. O N E 1 T W O 2 T H R double E 3 F O U R 4 F I V E 5 S I X 6 S E V E N 7 8 E I G H T 8 9 N I N E 9 T E N 10. Now, see the next question. Trace the lines to complete shape and color it. Okay, you can see some dotted lines. कुछ dotted lines दी हैं. इनके ऊपर आपको क्या करनी है? Lines trace करनी है. You have to trace the lines. और क्या करना है? Shape को complete करना है. And after that, after completing the shape, you'll color it. Okay? आप इसको color करेंगे. Understood? Yeah. Let us move to our last section, which is of EVS, Environmental Studies. Color the air transport. Air transport में आपको color करना है. So 3 transports की picture बनी है. First is hot air balloon, second is rocket, and the third is bicycle. अब इन 3 पिक्चर्स में से यहाँ पर जो भी एयर ट्रांसपोर्ट है सिर्फ उसी पिक्चर को कलर करना है. ओनली द पिक्चर विच इज अ एयर ट्रांसपोर्ट. जो एयर ट्रांसपोर्ट होगा सिर्फ वही, एंड कोई दूसरे पिक्चर को कलर नहीं करना. अगर जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एरोप्लेन, बस और शिप बना हुआ है, मतलब शिप. ओके, एरोप्लेन, बस और शिप बना है, और आपको कहा है लैंड ट्रांसपोर्ट को कलर करना है, तो आप सिर्फ बस को कलर करेंगे. ओके,
बस, बिकॉज बस इज द लैंड ट्रांसपोर्ट, और उसके अलावा एरोप्लेन और शिप को कलर नहीं करेंगे. सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ एयर ट्रांसपोर्ट को कलर करना है, कोई दूसरे ट्रांसपोर्ट को कलर नहीं करना. अंडरस्टूड? Yeah. So this was all about today's sheet. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.